We read the 7th and the 8th, right? 9th also. 9th also, yeah. 8th and 9th actually, yeah. So the universe is beautifully woven whole. Were we cut up? The undivided self. We divide ourselves, we don't see the unison. And the fact that we are born only to fulfill the Swadharma. The body is supposed to be used only for fulfilling Swadharma. So, spinning wheel का example दिया था, है ना? Has to be oiled regularly to keep it working. It is of use to us, so we must keep it working. तो ऐसा नहीं है कि बॉडी को निग्लेक्ट करना है, बॉडी का ध्यान रखना है, बट नॉट टू गेट अटैच्ड टू इट. लेकिन हम लोग का कैसा है, जिस चीज का ध्यान रखने लगते हैं हम उसको अटैच हो जाते हैं. घर का ध्यान रखते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं. गाड़ी है, गाड़ी का ध्यान रखते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं. डॉक्टर जयदेव हमेशा एक कहानी सुनाया करते थे इस विषय में कि आदमी बहुत मेहनत करके पैसा बचा के गाड़ी अपनी मनपसंद की खरीद के लेकर आया. सब परिवार वाले बहुत खुश थे. वो गाड़ी नीचे पार्क किया, घर पे गए, पार्टी कर रहे थे. इतने में, और वो नीचे जब पार्क किया गाड़ी को तो सब बच्चे उधर खेल रहे थे. उनको बोला, देखो सब इस गाड़ी का ध्यान रखना, इसके ऊपर बॉल वॉल नहीं लगनी चाहिए. मैं तुम्हारे को घूमने लेके जाऊंगा इसमें संडे में. हाँ अंकल सब ध्यान रख रहे हैं. उधर वो लोग अपने चाय वाय बना के पकौड़े वकौड़े खा रहे थे और यहाँ धाड़ करके आवाज सुनाई. फट से आदमी खिड़की पे गया. राइट इनफ, बच्चे जो बॉल से खेल रहे थे, गाड़ी का खिड़की का कांच टूट गया. और वो इतना आग बबूला हो गया, अपना आपा खो दिया. अभी तक तो गाड़ी आई थी, उसकी सेवा भी नहीं की थी, चलाई भी नहीं थी. उसके अंदर ये हो गया तो ऐसे. एंड डॉक्टर्स वर्ड्स आर दैट ही बिहेव्ड एज इफ ही वाज हिट. तो शरीर तो उससे तो बहुत ज्यादा करीब का है. तो उससे हम ये करें तो और ज्यादा सटलिटी चाहिए समझने के लिए. हम अपनी चीजों से इतना मोह कर लेते हैं. आई रिमेम्बर I think Jyoti, you were there in that class. अपना Vigneshwaran. He was so angry for that water bottle which was broken and his mother had thrown it away. And this is after 2 years. उसने आज भी उस बात को जैसे पकड़ा हुआ था, उस दिन की जो बात है, और गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था. बीसीडी का एक क्लास चल रहा था हमारा, उसके अंदर वो मम्मी डैडी के साथ में आया हुआ था. तो व्हाट आई डिड वाज आई गेव हिम सम पेन पेपर, न्यूज़पेपर दे दिया. तो मैंने कहा तेरा जो मन करता है कर इसके साथ में. अरे क्या उसने उस पेपर की चिंदी बनाई है. वो उसकी माँ ऐसे देखती रह गई, बोलती आई नेवर न्यू. उसको बोल के बता के फेंका था कि ये टूट गई, अभी मैं फेंक देती हूँ. बट दैट वाज माय फेवरेट बॉटल. भले भंगार में पड़ी थी लेकिन घर में तो थी, मेरे पास तो थी. We get so terribly attached, and unless and until we train ourselves, I don't know क्या क्या करेंगे हम. तो इस वीक में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाया. What non-self that we are attached to. ऐसी लिस्ट बनाते जाएंगे तो अभी दिवाली के अंदर सफाई करना आसान रहेगा. बहुत सारा कचरा निकल जाएगा. मैम मेरा भी ऐसा ही है. मैं ना बिफोर मैरिज के 1 साल के बाद
मम्मी के वहां पे गई थी, तो वहां पे ना मुझे मुझे कांच के जार्स बॉटल बहुत अच्छे लगते हैं किचन में, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं और फटाक से चीजें उसमें से मिल जाती है। तो 6 बॉटल्स में लेके आई थी। इतना महंगा था, मेरे डैडी चिल्लाए मेरे के ऊपर कि क्या जरूरत है, एक न एक दिन ये फूट जाने वाली है। मैं बोली नहीं, मैं उसको संभाल के रखूंगी और किसी की हिम्मत नहीं है इसको तोड़ने की। तो अच्छे से अभी तक तो सब अच्छे से गया, लेकिन लास्ट 3-4 महीने के बाद एक से एक बॉटल टूटने लगी। एक बॉटल टूटी, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। एक तो लास्ट जो टूटी वो अभी 3 है और 3 टूट गई। उसमें लास्ट थर्ड वाली मेरे हाथ से टूटी, लेकिन फर्स्ट वाली जब भावेश के हाथ से टूटी थी ना, तो मैंने क्या उनको ऊपर नीचे किया था। बेचारा फिर जब मेरे हाथ से टूटी तो मैंने सोचा अरे बाप रे, कितना इजी है ना, मतलब अपने हाथ से हो जाता है और किसी के हाथ से हो जाता है। तो और मतलब अटैचमेंट, वो मतलब ये फील्ड में आने के बाद पता चलता है कि अटैचमेंट, कांच की बोतल के लिए क्या अटैचमेंट रखने को। ठीक है ना, वो तो टूटने ही वाली है, आज नहीं तो कल, और कितना साल रहेगी ऐसा। मतलब इतना अटैच हो गई थी, तो इसका संभाल, साफ सफाई करते थे। कोई कोई स्टील का बर्तन रहता है, ऐसे धाड़ धूड़ करके फेंकते थे, लेकिन वो बॉटल को बहुत प्यार से धीरे से खोलने का, एक हल्का सा पोछा लगाने का, मस्त प्यार से रखने का। वो भी जैसे अच्छी छोटे, चीज है, बिकॉज आफ्टर ऑल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस कंजर्व करना चाहिए, वो भी अच्छा है। बट टू गेट अफेक्टेड व्हेन इट ब्रेक्स, हाँ, टू एक्सपेक्ट दैट इट विल लास्ट फॉर एवर, यस, दैट इज टू मच ऑफ एन अटैचमेंट। ध्यान रखना तो मतलब अभी करना ही है ना, यही तो बोला 9th पैराग्राफ में, वो लाइक अ तो है, मशीन, इफ यू आर यूजिंग इट नीड्स टू बी ऑयल। लेकिन वो नहीं है ना कि भाई ये मशीन है, उसको ऑयल डालना है, उससे काम निकालना है, वैसा नहीं है ना, वो अलग हो जाता है ना, हाँ, वो बस वही फीलिंग्स अलग बोलते हो हैं। जाती है, तो वो ये फर्क फीलिंग्स। ध्यान में रखना चाहिए कि काम में आ हाँ, रही है, बहुत अच्छा है, काम में ले रहे हैं, हाँ, लेकिन यस, ये जो हम, बहुत हल्का सा फर्क है ना, हाँ, इट्स अ बहुत वेरी पतली लाइन है। थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। यस, यस, तो कि ये मेरा फर्क कर फेवरेट। सके, ऐसा ही बोला है विनोबा जी ने। The one reason for these things breaking and getting affected is definitely attachment. The other is some kind of conditioning. Like in my case, when I was a kid, कुछ मेरे हाथ से टूट जाता, I used to get a scolding from my dad. तो वो ऑलवेज वो केयर होता था कि मेरे हाथ से कांच की चीजें टूटे ना। शादी करके आई, मेरे हाथ से एक दिन कप टूट गया, एंड आई थॉट माय हस्बैंड इज गोइंग टू शाउट एट मी। अच्छा। आई वेरी शीपिशली टोल्ड हिम कि मेरे हाथ से आज कप टूट गया। He's saying, कौन सी बड़ी बात है, कप है, टूटने वाला ही था। Wow, what a relief. God, after that I said no need for such worries. So that where see that is वो राग और द्वेष वाली बात है कि अटैचमेंट इन अ नेगेटिव सेंस वाली था। Yeah. हाँ, लेकिन द मोमेंट आई हर्ड दिस फ्रॉम हिम, आई सेड आज मैं मुक्त हो गई। अभी मेरे हाथ से कुछ Actually, भी it's टूटे, मेरे को freedom, नो yeah. प्रॉब्लम। How nice. चलो, कौन पढ़ रहा है? ज्योति पढ़ रही है क्या? हाँ, पढ़ना। पढ़ूंगा. But instead of using the body as an instrument, we lose ourselves in it and stunt our spirit, whereby the body, which has little intrinsic worth, has its worth still reduced. That is why the saints vehemently say, Deha ani deha sambandhe nindavi, itre vandavi shwan sukre. I don't know if I pronounced it Yeah, correctly. that's okay. You can read the translation. One should censure the narrow confinement to the body and blood relations. One may rather venerate even the pigs and the dogs. One should censure the narrow confinement to the body and the blood relations. One may rather venerate even the pigs and the dogs. Means, Not that. yeah. नहीं समझा. अंजलि, तो समझाइए मराठी वाला. No, it's not. I didn't catch the Marathi wala. I only heard the Anyway, the English translation. वाला But समझ.
The meaning is nothing but, being, it's literally seeing God in everything. We get too attached to those things which we think are nice and clean and good and everything. What is our perception? And we look down upon some things that we think we don't like. So एक तो राग है, दूसरा द्वेष है, दोनों तो two sides of the same coin है. Yes. So we have to recognize that the soul, whether it's within us or it is within any other thing, like once before Suchi had mentioned that even in a stone there is a soul, it is jad. Only thing is, that's why it cannot be expressed. In an animal it will be expressed, and in us it will be expressed more. That's the only difference. So we have to recognize that everything contains that inner same soul that we have within us, and respect it, and not be attached or averse to anything. एक सिंपल तरीके से कि हम लोग जो हमारे बॉडी में कन्फाइन होके और ब्लड रिलेशंस और इसी के अंदर फंसे रहते हैं अपना 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 करने में, इट इज द सेम एज पिग्स और डॉग्स को अपना बनाना. तो मेरे को तो वो थप्पड़ जैसा लगा. इज कंपेयर्ड द ब्लड रिलेशंस एंड द बॉडी के साथ रिलेशन विद डॉग्स एंड पिग्स. He said averse to pigs and dogs, na? Venerate, venerate मतलब Venerate even respect. the pigs and dogs. और Venerate वो even the दूसरे pigs. ऐसे हैं जो इनको भी what I was probably reading much more than what was written. तो राग और द्वेष दोनों की बात की है. तो राग इससे या द्वेष उससे वो एक जैसा सा ही है, is what he is saying. ठीक है. Oh my God! But आगे पढ़ो. बहुत तो अलग. Previously also from last 3 class I'm seeing हर जगह पे मेरे को ऐसी बात नजर आती है विनोबा जी की कहीं भी एक झापड़ वाली. पढ़. Do not therefore worship the body and its ties all the time. Learn to relate to others as well. The saints are thus exhorting us to widen our horizon. So do we ever open our hearts to those outside a narrow circle of friends and relatives? Do we ever try to identify ourselves with others? Do we let our swan self, the bird of the spirit, escape from the cage of the body and breathe freedom? Does it even occur to us that we should widen the circle of our friends continually so as to ultimately encompass the whole world and feel that the whole world is ours and that we belong to the whole world? We write letters to our relatives from the jail. That is natural. But would you write to a thief convict, not a political prisoner who has become your friend here after his release? My God, ऐसी सच्ची सच्ची खरी खरी सुनाते हैं ना. और ये बहुत अच्छा ये एक्सप्लेनेशन लगा मुझे कि तुम जैसे अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ में रिलेट करते हो तो उस फ्रेंड सर्कल को बढ़ाते जाओ कि पूरा विश्व तुम्हारा फ्रेंड सर्कल हो जाए. कैसा रहेगा? रोज एक आधे फ्रेंड ऐड करते रहो, जहाँ भी जाओ Ma'am, एक but और this नया फ्रेंड is, बना लो. ma'am, हाँ. ma'am, can you hear me? Yes, we can hear you. Can everyone? So my point is okay, you widen your network, okay, of friends, but human beings are packages, right? They come with their pluses, minuses, like all of us, okay? Now, what happens in that case is, after a point of time in any friendship, there is a level of understanding and adjustment, correct? दोनों तरफ से. Your voice is breaking. In so we any can't hear relation. the बीच last में sentence. आवाज कटने लगी तो लास्ट में जो बात बोली वो पूरी समझ में नहीं आई. ओ क्योंकि मैं रास्ते में हूँ. सुनाई दे रही है मैम? अभी सुनाई दे रही है मेरी आवाज नहीं. क्लियरली? ऐसा कर वीडियो बंद कर एक बार. वीडियो बंद बंद है है. मेरा.
अच्छा, ये बंद तेरा है। वो कितना सुंदर आसमान दिख रहा है, मेरे को लगा बैकग्राउंड है। नहीं, अब Your तो voice is बिल्कुल भी नहीं आ breaking, रही है, dear. आवाज बहुत कट रही है। आधी बात समझ में आ रही है, आधी नहीं आ रही। Payal, we can't hear you at all. अब तो बिल्कुल नहीं सुन रहा। मैं गाड़ी में, can you hear me? अब तो तुम Okay. म्यूट No, हो गई। sometimes when you go on the Leave it. flyover or under a bridge, you can't hear. Leave it, ma'am. Once I reach the Yeah, destination, yeah, I'll that talk. will be better. हाँ, चलेगा। Just Okay, note okay, for ma'am. yourself I'm where not you want to talking. चलेगा चलेगा। Yeah, yeah, I'm on the road, ma'am. So maybe the या net. Yeah. इसलिए तो फ्रेंड सर्कल बढ़ाने का है। कैसे बढ़ाएंगे? फ्रेंड्स बनाना आता है? बचपन में कुछ फ्रेंड्स जो बन गए थे वो बन गए थे, कुछ लोग हैं जिनके बचपन के फ्रेंड्स अभी भी टच में होंगे, खास करके स्कूल कॉलेज के टाइम पे। या 58 years की friendship है भाई, 59. वाओ। Wow. लेकिन विस्तृत कितना हम करते हैं? डू वी मेक न्यू फ्रेंड्स? आफ्टर Yes. एन एज आई फाइंड लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स। I don't know. Maybe I have never had that problem. Yeah, some people are social. No, and the thing is, I don't consider myself social. That is sitting on judgment, and your judgment No, may not why I'm always saying be this is the because universe ka I don't mix understanding. up that much. I don't mix up that much. I don't go out and mix that much and regularly be in touch What is with your people. concept of mixing up, and universe concept of mixing up may be different. Yeah, maybe different. But at the same time, whenever I come across people, I can speak freely, comfortably with anybody, just about anybody. So then what is the statement that you're making, that you don't mix up? I didn't say I don't mix up. I said I mix up. I don't mix on the daily basis that way. Daily Yeah, regular basis अब मेरा नहीं daily होता तो है. यार at one point of time मैं ऐसा सोचती थी कि जितने लोगों को जानती हूँ सबके साथ में यदि कनेक्शन में रहना है तो साल में एक एक दिन का भी करके करूँ तो पूरे साल में एक एक दिन कम को पड़ेगा, एक एक दिन को करूँ तो जान पहचान तो इतनी सारी है और फ्रेंडलीनेस भी है। हाँ, फ्रेंड्स बोले तो मैं जिनको फ्रेंड्स मानूं, गिने चुने. हाँ नहीं, गिने चुने ही नहीं, वो भी बहुत है, लेकिन किसी के साथ में भी ये नहीं है। देयर आर पीपल whom I have met after 6 years, but it was like we met yesterday and we met again today. That gap was not a gap at all. Like वो this, हिंदी में I बोलते हैं ना, went जो to दिल that के Madhya करीब है. Pradesh में friend के यहाँ ना, हाँ. after coming back from Indore, which was in 2004, she had once come down to Bombay around 2011 or something. And occasionally we would talk on the phone. Occasionally means once in 2-3 years. उसका इतना occasional. और वो भी जब उसको कुछ परेशानी होती थी कि इसका जवाब ढूंढने का है तो अब आप बताओ, तो इसलिए बात होती है। बट उस दिन उसने फोन किया, बस अब आप आ जाओ, मैंने टिकट बुक की और चली गई। No, it didn't seem like there was a gap. And somebody whom I had not kind of been keeping in touch or meeting often and all that. And late in life I've met her. तो ऐसे भी बहुत सारे हैं. I don't know, each one's concept of friendship and friendliness, I think it varies. Yeah. Like for me, it's very easy to talk to even, people whom I met casually. But to talk to a total stranger, it becomes difficult. In a social setting, if I come across somebody, I may talk. Okay. But random persons on the street, I will never be able to talk to.
like I can just say, like in my place over here in Vadhuj, this place is maybe 2 or 3 suburbs of Bombay put together. अपने एरिया में, जितने एरिया में जहां पे भी मैं जाती हूँ, सबके साथ दोस्ती हो जाती है, दुकान वालों के साथ, सबके साथ. I mean, people don't forget me. भाजी वाला, ये वाला, वो वाला, सब लोग, कोई मेरे को भूलता नहीं. And there are the people I've met after 5 years and 6 years, like her, random people, and they say, you know, like one bhaji wala told his mom, give her the best vegetable, she is my madam. I said, Baba, when did I become your madam? I don't even remember you. He said, 6 साल पहले मैं आपके गली में बेचने आता था. अच्छा. I said, लेकिन इतना मैं तो भूल गई. And then he saying, नहीं ma'am, I can't forget you because of the way you spoke to me. So that way, you know, so I don't know. Yeah, वसुधैव कुटुंबकम तभी बनेगा. लेकिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे जब होता है. I have met, gone once to one sit in the Aurangabad city. Once we went, my husband and I, we had some roadside wo Chinese, and we came back, and exactly a year later we went, and I asked that fellow, you only recommend what is best here that I can have. Saying, आपने last time जो खाया वो ही खाओ. Oh my God. I said, मैंने last time क्या खाया मुझे याद नहीं, आप बताओ. And both my husband and I are looking at each other. इसको हम लोग याद है, जाने तो हम लोग ने क्या खाया वो भी याद है. You must have left such an impact on him. I Depth know of that. connection. Yeah. No, but we were shocked because of that. How sweet. How nice. How nice. I know that fellow must have had a fantastic memory. But then I suppose some people in our lives touch us in a way that we don't forget them. That also is there. हो जाता है. Yes. Anyway, what comes let's to my mind proceed. is being approachable. One is you Yeah. approach easily, and another is being approachable yourself. आजकल मेरा सबसे ज्यादा डिस्कशन किस बात से होता है मनु है, मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं अपनी थैली लेके जाती हूँ, प्लास्टिक नहीं लेती हूँ, और उस बात से हम लोग का कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है. Wow. Yeah, good way to begin a conversation. Because they start with, ma'am, thank you very much. आप one of the few हो जो नहीं ले अपनी थैली लेके आते हैं. शुरू वहां से हो जाता है. Yeah. तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या करते हो? So मैम मेरे लिए तो I never had friends बचपन से. In fact, now when I see, it's at this stage after coming to yoga, I've actually had friends. एक बीच में थी, when I was working, there was one lady, and I'm still in touch with her. But now, after I have shifted to yoga, our thought processes have changed somehow, and so I don't talk to her. But हम जब भी बात करते हैं, करती हूँ मैं ऐसे 2-3 महीने में एक बार या ऐसा something. But she is the only one who's constant. She's been with me. She's my work friend. But ऐसा अभी right now when I am seeing, but I see lot of cases, जैसे भी अंजलि मैम बोल रही है ना, 58 years. I see lot of people around who have still maintained school का friendship, college का, and all that contributes to your growth, and you know, and अभी भी जो उनके relations हैं अभी अच्छा लगता है. They have somebody to Friends, spend time with. sisters, उनकी भाभी, पता नहीं वो लंबा लंबा, उनकी हाँ बहुत बहुत बहुत. So that part is this thing, but I'm enjoying this space also, and I feel I am my best friend now. मैं अपने साथ ही बहुत खुश रहती हूँ, और कभी किसी से बातचीत भी होती है, जैसे आप बोलते हो ना अंजलि मैम, हाँ मैं किसी से, बट इट्स अगेन लाइक माइंडेड कम्युनिटी हो, जैसे पता नहीं कहीं थॉट प्रोसेस थोड़ा मिलना चाहिए, मैं रुक जाता है. आपके मेरे में वो कमी है, मेरे में वो कमी है. It's nothing to do with like-minded. It's just that some people have more the ability to talk. See, Abhi, for that matter, I know Suchi's whole family. I know Nishi's whole family. I had almost known, not fully, but to quite an extent, Niranjan's family. वो जाने दो, मेरे भाभी के, मेरे cousins के, in-laws के, सबके in-laws के family से मैं
And it's not the first cousins. I mean, not the immediate chacha vacha like that. उसके father mother के cousins को भी मैं जानती हूँ. And I'm in touch with all of them. तो ये हो जाता है. Some people just have that capability to mingle with everyone. To communicate at that humane level. Yeah. That ability to commonality, mingle is also like-mindedness यदि necessary. बोलो, तो like-mindedness is being human. Yeah. तो वो एक जो इंसानियत के नाते, how you make the other person feel in your presence is what will make people come and talk to you again or remember you. No, also I think some amount of sensitivity makes a difference. Like I remember in one of the 1 month classes, there was this lady, she troubled me like lots. She was a senior lady. She used to pretend she's got a leg problem, not able to walk. She would trouble for the stairs, she would trouble for the fan, she'll trouble for everything. Generally, she's created trouble. दसरा के नवरात्रि में गरबा में नाची है बिना कुछ प्रॉब्लम, फिर भी ट्रबल किया है. एंड ऑन द एंड आई मीन आई वाज exasperated with her, but I used to talk nicely to her, but she still continued. And on the last day, we were in the dining room because they wanted to cut a cake and have it and all the kids. And then everyone, whether it's the boys or the men or the girls, everyone came and gave me a hug. And I suddenly noticed that this female is running away from the dining room. Khaya, or she was going. And I saw the expression on her face. And I just called out to her. I said, aren't you wanting a hug? I asked. So the moment I said that, she came running. And I gave her a hug. After that, for 2-3 times she came to the institute. She made it a point to search for me and talk to me. See, somewhere, sometimes people may not be wanting to talk or maybe behaving funnily because they don't experience love. Yeah. And they need it. Yeah. They need the attention, they need the love. So when you meet a person without a smile, give him one of yours. Oh, give him one of yours. Correct. I read this quote many years ago, and it makes so much sense. Absolutely. Now, the most khadus person will also want to, at least give you a little bit of a smile. Nice. Sure. ऐसा हो जाता है. प्रियंका कुछ नहीं बोलेगी? किसी के लिए टिप है. Do you like kids? Very small kids. किसको पूछा? मेरे को मैं? हाँ. I love kids. मुझे बच्चे, youngsters, I love their energy. नहीं. Wherever you see an adult with a small kid, not talk to the kid, the adult will talk to you. Outside random people I talk, ma'am. But when there are specific, there are a group of friends, there are so I am वहाँ में जैसे आप कैसे बोलते हैं ना, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ. I will shut down there. मैं बैठूंगी वहाँ पर, but चुप हो जाती हूँ. If I don't relate to the conversation, I'll keep quiet. Probably you are doing the role that many people don't do, being a good listener. I don't know. Actually, I don't know. I will agree on that. I don't know. Because वो अपनी दुनिया में चली जाती है. She couldn't care what the others are talking. Oh, if it is not relevant, I छोड़ देती हूँ. It is that irrelevant to her, I know. So it's not that you don't know, you know. Ma'am knows. Ma'am knows. Sujitra ma'am knows. Yeah. And I'm trying consciously to be part, of that conversation. But नहीं हो पा रहा. फिर मैं बोलती हूँ तो उसमें energy दूँ. ठीक है, चल रहा है, चलने दो. Somewhere like I think. Yeah, if I have to first be at ease, no, first of all, I don't want to become uncomfortable and spoil rest of my days. So I choose to be at ease and communicate with myself first. Everything. So currently I'm comfortable, and everybody has understood also. They have seen a large shift. In fact, just recently we were with my family, my immediate, my mother, my brother, my sister, सब बोलते तू कैसी थी, तू कितना घुसती चली जा रही. They have a different picture only of. But I said, I'm absolutely fine, I'm happy, I'm this, that. But उनको नहीं समझ में ही नहीं आ रहा. They find that उनको लगता है मैं कुछ और हो गई. I said, it's okay. It's okay. I am comfortable, but they are not. अब मैं क्या करूँ? ठीक है.
मेरी फ्रेंड है, हम लोग लंगोटिया यार, मतलब कि क्या बात बचपन है। से साथ में खेले। वो छोटे छोटे थे ना, जब फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, बाल मंदिर, वो केजी, सीनियर केजी जो बोलते हैं, पहले हम लोग में बाल मंदिर बोलते थे। तो वहां से स्टार्ट है, अभी तक हम लोग ने मतलब फ्रेंडशिप मेंटेन किया है। क्या इवन बात है। मेरे इन-लॉज है, उसके इन-लॉज है। इवन उसका जब भी फर्स्ट टाइम उसको मतलब लड़का देखने के लिए जाने का था, तो उसकी मम्मी ने और उसने मुझे भेजा था कि तू जाके देख के, अगर घर अच्छा है तो मैं शादी करूंगी। सो आई इम्प्रेस हिज फादर इन लॉ। मैं बोली फादर इन लॉ के हाथ में सब कुछ है, मतलब घर बहुत अच्छा है। तो अभी तक भी है, मैं जाती हूँ अहमदाबाद में, मेरा मायका अहमदाबाद में है। तो मैं सिर्फ सैटरडे संडे जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ, तो पूरा ऐसे नहीं टाइम मिलता है रुकने के लिए, तो वो आती है मुझे ट्रेन पे मिलने के लिए, या तो नहीं टाइम मिला तो एक 10-15 मिनट्स के लिए घर पे आ जाएगी हस्बैंड को लेके। स्टिल मतलब हम लोग ने मेंटेन करके रखा है वो बचपन से अभी तक का। That connection is different only. यस यस, कभी भी ऐसे बहुत टाइम के बाद बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं तो फिर 1-2 घंटे निकल जाते हैं, कैसे जाता है वो टाइम पता ही कहाँ नहीं जाता है चलता मालूम है। नहीं चलता। हाँ, और आज तक मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, सब लोग वैसे ही बोलते हैं, जैसे कि मेरा किसी से पटता नहीं है, लेकिन तेरे से कैसे पट गया वो समझ में नहीं आता। wow, that's the biggest compliment that you can get. Yes. हाँ, सब लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब विनोबाजी गिने बोलेंगे चुने तूने हैं। मेरा लेसन बिना पढ़ाए पढ़ लिया। यस, मतलब सबके सामने ओपन नहीं होते ना। ये ऐसा नहीं है कि सब बात सब लोगों को बोल देते हैं, लेकिन ऐसे 5-6 लोग हैं ऐसे लाइफ में, जैसे बोला जाए कि एक फ्लावर, एक गार्डन में ऐसे 4-5 फ्लावर है। मैंने ऐसे सोच के रखा है, मेरा एक लाइफ एक गार्डन है, और उसमें ये 5-6 ऐसे फ्लावर्स है जो मतलब मुझे हमेशा हक देते हैं, मुझे महसूस करवाते हैं कि हम वाह। लोग है, तेरी लाइफ में कुछ है तो तू मुझे बताया कर ऐसा। तो उन लोगों को प्रॉब्लम है तो वो लोग शेयर करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं शेयर करती हूँ, हो जाता है, चलता है ऐसे। That's it. One of the reasons somebody warms up to a person also is and shares especially secrets is if they are confident यस that जिसके साथ हम बात करते हैं वो Yeah. किसी को नहीं बताएंगे, यस, वो सेम ट्रस्ट लाइक होता है तो उन लोग आपके साथ शेयर करेंगे. इज माई रिलेशन। मेरे जो मेरे मम्मी के वहाँ पे जो रिलेशन है, मेरे कजिन सिस्टर्स जो है, मेरे भाभी लोग हैं, तो वो लोग मतलब बोलते हैं मुझे ऐसा बड़ा मानते हैं और समझते हो। और वो बोलते भी है, आपको कसम है आप किसी को मत बताना। मतलब पूरी फैमिली को पता है कि किसी हाँ। को नहीं पता, लेकिन पूरी फैमिली मुझे बताती है, आपको इसकी कसम है किसी को नहीं बताना। वो बोलते हैं आपको इसकी कसम है किसी को नहीं बताना। पता नहीं रहता। इवन आई एम नॉट टेलिंग इन माई इन-लॉज ऑल्सो, माई हस्बैंड ऑल्सो, हाँ, बट वो ट्रस्ट yeah, मेंटेन you करते हैं। don't carry one thing from here to there. पोस्टमैन नहीं यस, बनने का जबरदस्ती का। हाँ, मतलब बोलो भाई And आप not लोगों to को sit with प्रॉब्लम है judgment. तो यस, Be ठीक है। non-judgmental is what will make good, यस, healthy तो conversation तो and मैं कभी happy भी, feeling. हाँ मैम, यस, अभी मैं 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद कभी भी उधर जाती हूँ ना, तो इतना रिस्पेक्ट मिलता है ना अपने को। Yes. मतलब वो अच्छा लगता है, अपनी केयर करते हैं, भले 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए उधर रुकते हैं, लेकिन सब हाथ में मिलता है, और उठने नहीं देते, और कितना प्यार करते हैं, मतलब खाना जो चाहिए वो मिल जाता है। तो और इससे अलावा क्या चाहिए, तो फिर हैप्पी। Very good. एक उन्होंने जो लास्ट में बात कही है, बट वुड यू राइट अ थीफ कॉन्विक्ट, नॉट अ पॉलिटिकल प्रिजनर, who has become your friend here after his release? ये This is सोचने about लायक being चीज है। non-judgmental. यहाँ पर तुम प्रिजन में हो, साथ में हो, तो बातचीत हो जाती है, फ्रेंडशिप डेवलप की है, बट वुड दैट फ्रेंडशिप कंटिन्यू इज समथिंग टू थिंक अबाउट. चलो आगे पढ़े. The self is ever restless to reach out to others. It longs to embrace the whole world, but we shut it up in a cell. We have imprisoned it and are not even conscious of it. From morning till evening, we are busy minding the body. Day and night, we worry about how fat or thin we have become. Perhaps there is no other joy in the world, but even beasts experience the pleasures of the senses. Will you not like to experience the joy of sacrifice, the joy of controlling the palate?
Experience the joy of giving away your plate of food, even though you yourself are hungry. A mother tastes this joy a little when she toils for her child. In fact, even when one limits oneself in small circle of I and mine, one is striving unconsciously to experience the joy in the enlargement of the self. Thereby, the self, otherwise encased in the body, is released to a limited extent and for a little while. But what sort of release is this? It is like a prisoner coming out of his cell into the prison courtyard. This hardly satisfies the self's aspirations. It wants the joy of unbound freedom. Huh? I and mine. तो यानी माइंड के अंदर तुम सबको इंक्लूड कर सकते हो ना, कर सर्कल इंक्रीज करके. सकते. The mind can extend. जो मदर और बच्चे की बात जो उन्होंने कही है, that mother would even sacrifice the joy of all her joy and her need also for the sake of the child. लेकिन वो एक temporary period होता है. What sort of a release is this? It is like a prisoner coming out of his cell into the prison courtyard. This hardly satisfies the self's aspirations. It wants the joy of unbounded freedom. But if we are happy only within ourselves, and we are not happy when we have to share ourselves with others, तो फिर freedom कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना? Unbounded freedom नहीं हुआ. हाँ. What is unbounded नहीं हुआ, अभी है, अभी conditioned है. लेकिन बहुत कोई अच्छे बात से बात हाँ. कही है ना. Previous paragraph का मैम वही continue हो रहा है ना. Venerate even the pigs and the dogs. हाँ, पढ़ लो. नहीं, मैंने कहा previous की वही जो the same thought process is continuing. वही जो judgment है. इसमें जो sequence use किया है ना, hats off यार. I'm really happy that I'm reading it at this slow pace. वो जल्दी जल्दी पढ़ लेके overall idea आ जाता है, लेकिन ये से जो इकट्ठा होके डिस्कस करते हैं, तो जो छोटी छोटी सी बातें जो उसकी पकड़ी जाती है ना, बहुत अच्छी लगती है. And there's such a wealth of unique thoughts. Every line, yeah. Each line has. Perhaps there is no joy in the world, but even beasts experience pleasures of the senses. Sense pleasure. हमारा सांख्य with सुचित्रा के अंदर यही होमवर्क है इस बार. Senses के ऊपर. He's talked about that whether when you're hungry you'll give a plate of food to someone and experience that joy. तो उसके बारे में एक स्टोरी मैंने recently पढ़ी थी. So there's a sage who goes for भिक्षा to various places. And one day he reaches the king's palace and the king अपने palace में से बहुत सारा चीज उसको देता है. बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाता है, उसको कपड़े देता है, बहुत सारी चीज देता है. और फिर उसको पूछता है कि आप को क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा दानशूर है. Because this king is known to be दानशूर, so he expects that saint to say you are दानशूर. So he says no, that in one particular village I had come across this Brahman. उसकी जितना दानशूर मैंने किसी को देखा नहीं. तो उसको आश्चर्य होता है. इसे उतना क्या उस ब्राह्मण का कि आप उसने आपको कितना दिया. He says मुट्ठी भर चावल.
He's saying, और आप उसको जानशूर बोलते हैं? He's saying वो ब्राह्मण ने प्रण लिया था कि एक दिन में जितना वो अर्न करेगा, in those days it used to be वो चावल देते थे ना, तो जितना अर्न किया सिर्फ उतना उसका उस दिन का था. वो मीन्स एक मुट्ठी भर जितना एक हाथ में आता था, he would not earn more than that, and that would be enough for his family, himself, his wife, son and daughter-in-law. So one day he goes to that man's house, and when they're all sitting for food, nobody has started eating, but the food is there, so they immediately saint आया है करके उसको बिठाते हैं, and the Brahmin first gives him his share of the food. And then, because that fellow is still not satisfied, the wife gives, then the son gives, then the daughter-in-law goes to give. Then he says, but why are you giving? Each one he keeps asking. Says, no, that till you are not fulfilled, हम लोग का duty बनता है कि आपको खिलाएं. And then he being a sage, he knows कि उन लोग का वो उतना ही है खाना, घर में चावल और नहीं है. So after he finishes eating, he says, "Yeah, आज तो आप लोग भूखे रहोगे क्योंकि आपने प्रण लिया है कि आप इससे ज्यादा आप खाओगे नहीं." तो उसका क्या? They say it doesn't make a difference. So he says, जितना उनके पास था, उन्होंने जो मुझे दे दिया वो 100% हो गया, और जिस भाव से दिया वो 100% से ज्यादा हो गया. आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन आपका भंडार अभी भी भरा हुआ है ना. So he says, in that sense, that fellow is a bigger giver. Absolutely. So it's not how much you give, but the percentage wise, it works out. Proportionately. Proportion. बात तो सही है. So that's राजा why उतना this देके point भी is very. It does not matter. That's why this point is very valid. कि हम लोग को भूख लगी रहती है, उस वक्त हम देने को तैयार हैं. Yeah, that's truly giving. That's truly giving. तो अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाएं अपन इस वीक में. ऐसा कुछ दान वान करके भी बढ़ाएं. क्यों नहीं? You know, ma'am, but these things, I guess it is a principle of Sankhya कि अपने आप को तकलीफ दे के दूसरों को भी अच्छा करो. But do you think, ma'am, it stops there? Wouldn't that soul also need that food or whatever? How can always the joy of giving go beyond your bodily needs also, as in the case of a Brahmin? What makes you give in such state is the faith that you will be looked after, and you are looked after. That strong faith, if it is there, you see, we only hear this much part of the story because it's relevant just now. In another situation, you will hear the rest of the part of the story also. That in this manner, when one gave that away, कहाँ से कोई आत्मा क्या लेकर आएगा? जैसे नरसिंह मेहता की कहानी जो है, उनका मायरा सुना है नरसिंह मेहता का? नहीं मैम. अरे सुनने लायक है, एंड बहुत पुरानी बात भी नहीं है. And this actually happened, and not ठीक है, नरसिंह मेहता तो फिर भी थोड़ा इतिहास हो गया. Even in the current time, I'm forgetting the name of the organization. There exists one organization, and they were there, the husband and wife who run this whole place. They were there on Kaun Banega Karodpati with Amitabh Bachchan in one of that Friday episodes that used to come, no, with special guests. Yeah. And what they do is they are just serving, needy and all that. तो उस दिन का जो भी जरूरत होती है, वो सारी जरूरतें लिख के वो मंदिर में भगवान के चरणों पे चढ़ा देते हैं. And it's rarely happened that one or two things has not been fulfilled. But everything that they have written
comes God knows from where. कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके देके जाएगा. Everything needed is available and used up, all for serving. जब कभी तो अमिताभ बच्चन asks him कि लेकिन जब कभी कोई चीज नहीं आती है, आप बोलते हो कभी ऐसा भी होता है, तो कि तो हम समझते हैं कि हमारी ही श्रद्धा में कहीं कुछ कमी रह गई होगी, तो उसका हम जैसे व्हाट ही सेज इज थोड़ा पछतावा भी करते हैं, और ज्यादा श्रद्धा के साथ में अगली बार हम वो चीज लिखते हैं, और जो जरूरत है वो सारी पूरी होती है, तो कुछ भी नहीं लेते. On the set, Amitabh Bachchan always gives them a token, no, whoever comes. Yeah. So these people did not take even that token. कुछ मेडल था, गोल्ड था, ऐसा कुछ, which he used to give every Friday to the guests. They did not take that also. कि ये श्रद्धा होनी चाहिए, और नरसिंह मेहता की कहानी का यही है. जो बेटी तो मायरा समझते हो ना, कि बेटी की शादी तो जल्दी छोटी उम्र में हो जाती थी, लेकिन जब वो बड़ी होती थी तब उसकी विदाई होती थी तब उसके साथ में सारा दहेज दिया जाता था. तो अब लड़की को विदा करने का टाइम आ गया था, और वो लोग लेने आ गए थे, ससुराल वाले, बेचना ही था. तो वो तो अपने फकीर आदमी है, तो भगवान की भक्ति के अलावा कुछ करते कराते नहीं है. खुद का खाना पीना चल जाता है, कहीं से आ जाता है, चल जाता है, उनकी बीवी उसमें से खा लेती है, खा लेती हैं बच्चे, लेकिन दहेज देने के लिए उनके पास में तो क्या, मेरे तो ये भगवान ही है. नानी बाई उनका नाम है बेटी का, तो नानी बाई को मायरा, तो वो तो के मायरा भरना है, आप जानो. ठीक है, जिस दिन मायरा भर के उसको लेके जाने का, विदा करने का दिन था, बैठ के वो टूटी फूटी सी जो भी उनकी गाड़ी थी, टूटी फूटी गाड़ी के अंदर सवार होके चल पड़े, देखा जाएगा, ठाकुर जी भरेंगे हमारा तो नानी बाई का मायरा. एंड राइट इनफ, रास्ते में कहीं पर सोए थे वगैरह कुछ, जब सुबह उठे हैं तो उनका जो टूटा हुआ जो गाड़ूला जो बोलते हैं उसको, उसकी जगह पर एक अच्छा मजबूत रथ जैसा खड़ा है, और कुछ दो आदमी खड़े हैं. आई एम फॉरगेटिंग द डिटेल्स, लेकिन इट सीम्स कि ये आपके लिए भेजा है ठाकुर जी ने. हाँ, सांवरिया सेठ ने ये आपके लिए भेजा है. आप नरसिंह मेहता हो ना? हाँ, तो ये नानी बाई का मायरा भेजा है सांवरिया सेठ ने. वो तो दीवाने हो गए ज्यादा, तो चलो ले चलो. तो नानी बाई के घर पे जब ससुराल पहुंचते हैं, तो ससुराल बड़े खुश कि दिखता तो ये आदमी ऐसा था, बहुत अच्छा मायरा भरा, किसी को घर में बाकी नहीं छोड़ा, दूर दूर के रिश्तेदारों तक के लिए कुछ ना कुछ था. गहनों की जगह गहना, सोने की जगह सोना, वस्त्रों की जगह वस्त्र, खान पान की चीजें, मिठाई, फल फूल, मेवा, सब. और ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है. So that energy still exists with all of us. It's for us to have that faith. उतना विश्वास होगा तो ये चीजें आज भी होती है, लेकिन हमें तो अपने आप पर ही विश्वास नहीं है. yes, इसके बारे में ना हम लोग ने बचपन में सुना था, मतलब कि वो जो ऐसे पिक्चर में, मूवीज में देखा है नरसिंह मेहता की मूवीज में, कि वो जब सो ना, तो स्वयं कृष्ण भगवान और रुक्मणी जो है ना, वो लोग एक सेठ और एक सेठानी ऐसा रूप लेके आए थे, कुछ आते हैं. और सबसे आगे the details. What I'm saying is कि उन्होंने तो सांवरिया सेठ के हवाले कर दिया. हाँ, yes. तो सांवरिया सेठ ने भेज दिया.
मूवी में देखा है ऐसा। है ना? हाँ, नहीं, मायरे की जैसे भगवत कथा होती है भागवतम, वैसे कई लोग हैं जो मायरा पढ़ाते हैं। यस, 7 दिन होता का, है 7 ऐसा। दिन का नरसिंह मेहता नानी बाई को हाँ, मायरा। मारवाड़ी yes. गुजराती में बहुत होता है। और पढ़े आगे, है टाइम? नहीं, 4 ही मिनट। 56 हो गया है। नहीं, योगिता को 4 बजे जाना होता है ना, प्रियंका को भी जाना होता है ना। हाँ, आज प्रियंका ने तो बोला भी नहीं, दिखाया भी नहीं चेहरा। she must be busy. No, ma'am. The maid is around, so I'm like going around, so that's why I keep my video off. ठीक है, ठीक है, ठीक है। This वाह, is the time, 3 to ब्यूटीफुल। 4 is the maid's time. आई नो। At least time से तो आती है कम से कम। हाँ हाँ, चलो, चलो। पायल को बोलने का रह ही गया, उसका नेटवर्क नहीं चल रहा ठीक से। नेक्स्ट टाइम शुरुआत करेंगे पायल से, नेक्स्ट थर्सडे। Okay. Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक Bye. यू, Thank you, ma'am. बाय। Bye.